Page number 216 and 217. One chart is there. Food as source of different nutrients. Which kind of foods contains which kinds of nutrients? Today we will read. If the following nutrient is deficient in the diet, such as when the children or any of the person is suffering from energy deficiency, then you should advise them to take cereals, roots and tubers, means potato, sweet potato, yam, colocasia, etc. Fruits such as sweet banana, ripe banana, sapota, mango, sugars are the most concentrated form. These are rich in carbohydrates that provide approximately 4 kilocalorie. When you will start counting the calories of a food, then you should 1 gram of calorie, 1 gram of carbohydrates is equal to 4 kilocalorie. Then if you will advise the patients to take or child to take 100 kilocalorie, then how much carbohydrates the person should consume is 100 into 4 is 400 kilocalorie. 100 gram of carbohydrate if you will advise to the patients, then how will you convert into calorie? Then you have to 1 gram of carbohydrate is equal to 4 kilocalorie. 100 gram of carbohydrate is equal to 400 kilocalorie. Like this you have to calculate your daily or patient's daily kilocalorie or carbohydrates carbohydrate value or the food contains calorie माने food रे जो calorie अच्छी जदि 100 ग्राम रो चूड़ा आपण काहाको एडवाइस करूछंती, then its kilocalorie is 400 kilocalorie contains 100 gram of चूड़ा, 100 grams of rice flakes. तो 100 ग्राम्स ऑफ जदि चूड़ा दौचु तेबे आमे 400 किलो कैलोरी ताकू देलु बोली एई भडा काउंट करिवा. 1 ग्राम ऑफ carbohydrate is equal to 4 kilocalorie. So fat rich energy are of two types. One is the carbohydrate and another one is fat. Then what are fat rich food? Nuts, oil seeds, fish, meat containing high amount of fats. Vegetable oil, ghee, vanaspati, butter are the most concentrated sources. These are rich in fats. Then two types of fats are there. One is visible fats, another one is invisible fat. Visible fats are very it harms to our body, and invisible fats are very good for our body. Visible fats are oil, ghee, banaspati, butters, etc. We will advise to take in lesser amount. But invisible fats content foods are nuts, oil seeds, fish and meat containing good quality of fats, or we will take in more amount than the visible fats. Okay, protein, 1 gram of protein is equal to 4 kilocalorie. When we will calculate protein into calorie, then if you advise any one of them of 50 gram of protein per day, then 50 into 4 is equal to 200 kilocalorie you are advised while giving to the 50 grams of protein to a person. जदि आप 50 ग्राम रो किछि प्रोटीन जिनस बा डाल काहाको एडवाइस करूछंती ता कैलोरी कन्वर्ट करबा इनटू 4 किलो कैलोरी पर केजी 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, then 200 किलो कैलोरी you will advise the person. Then proteins contain pulses, milk products, eggs, meat, fish, nuts and oil seeds. And after that, what about the vitamin? Vitamins are of two types. One is water soluble vitamin and another one is fat soluble vitamin. Fat soluble vitamins are vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Well, fat soluble vitamin absorbed in our body, but water soluble vitamins are not retained in our body. It will excreted from our sweat and urine, feces, etc.
तो वाटर सल्युबल विटामिन टा हमर कोन हुए ना बॉडी रे स्टोर हे के रही पारे. इट कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी. जेतले स्वेटिंग होची यूरिन ए सब जगह रे वाटर सल्युबल विटामिन्स एक्सक्रेट हो जाए. बट इन केस ऑफ ऑयल सल्युबल विटामिन्स इट विल इजीली स्टोर्ड इन आवर बॉडी. तो ताकू हमें रेगुलरली यू हैव टू टेक water soluble vitamin, and in very low in very limited amount you will take vitamin oil soluble vitamin. Then vitamin A are of two types. One is animal source of vitamins and another one is plant source of vitamin. Animal source of vitamins in vitamin A in liver, egg yolk, cream, butter, ghee, milk, and all good sources of vitamin A. These are known as retinol. And in plant sources, how will you get vitamin A? Plant ru ame kon pau na, it is known as beta carotene. Fruits such as carrots, yellow pumpkin, yellow, orange, and green color vegetables are known as uh, beta carotenes. And yellow, orange contains food. Yellow, orange, and green color and vegetables are known as beta carotene. And yellow pumpkin, mangoes, etc. माने येलो कलर माने हमर pumpkin आसीबो, mangoes आसीबो, ripe papaya, तो and orange रे आसीबो carrots, then orange fruits भी आसीबो orange रे, green leafy vegetables green color रे आसीबो. It is known as carotenoids. हैला carotenoids. And in animal source को कहंती retinol. तो सबुठु एनिमल सोर्स ऑफ फूड रे हमर विटामिन ए टिके अधिका थाए, प्लांट सोर्स रे टिके कम थाए. देन विटामिन डी. विटामिन डी हला बहुत रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी सनलाइट. when it will expose on your body, then vitamin D will create in our skin or body. Then animal foods like eggs, butter, fish liver oil, all kinds of fat contents food. Vitamin A. Then vitamin E is vegetable oil, whole grains, deep green leafy vegetables, pulses, nuts, and oil seeds. This contains vitamin E. And K is dark green leafy vegetable, egg yolk, liver. So these are the oil soluble vitamin. Every day we will take little amount according to their values or the ICMR guidelines. We will every day will take each kind of vitamin, oil soluble vitamins A, D, E, K. Then what about water soluble vitamin? Is B1 is thiamine. Food contains whole green cereals, pulses, nuts, egg yolk, and meat. Vitamin B1. Then B2 is riboflavin. Then green leafy vegetables, milk, eggs, organ meats like liver, kidney. It contains vitamin B2. And B3 is niacin. Niacin cereals, pulses, milks, nuts, oil seeds, organ meats, fish, etc. Then folic acid, vitamin B9, whole green cereals, leafy vegetables, milk and eggs, organ meats like liver, kidney, all are contents of B9 or folic acid. Then folic acid B6. B6 contain whole green cereals, leafy vegetables, milk, eggs, organ meats, liver, kidney. And B12 is animal products like eggs, organ meats. B12 only we will found in animals rich food. जिते animal source रू हमको मिले vitamin B12, plant source रू इतने हमको मिले नहीं. तो then biotin is vitamin B9. Then it also the food sources are animal organs, meats, and whole grain cereals, leafy vegetables, milks, cheese, curds, etc. And after B vitamin, C is all water soluble vitamin. C is citrus fruits, amla, guava, lemon, orange, capsicum, green leafy vegetables, green chili. Sir, vitamin C. Then about calcium minerals.
We will take calcium, milk and milk products, small fish, seafoods, ragi, pulses, then gingerly seeds, rasi, then green leafy vegetables, and from phosphorus, egg, milk, poultry, fish, cereals are resources present in most food. Then iron hela, it contains only animal sources of food. So iron hela liver, kidney, spleen, whole cereals, pulses, green leafy vegetables. Then what about iodine? Iodine we will get from seafoods, crops grown on soil rich in iodine. Iodized soil ଯେତେବେଳେ iodized ଯୋଉଠି soil ରେ ବହୁତ iodine ଥାଏ ମାନେ କୋଉଟା ନା ସି coastal belt ରେ ବହୁତ iodine ଥାଏ ତ ସେଇଠି ଯାହା ବି ଆମର fruits vegetables ହବ it contains good amount of iodine. And iodized salt can be used instead of ordinary salt in most cases. Then sodium, take salt in adequate quantities, milk, egg white, meat, poultry, fish, then leafy vegetables, some pulses, it contains sodium. Then potassium, fruits, vegetables, meat, poultry, fish, pulses, whole grain cereals, etc. It contains potassium. Then chloride, it include enough quantities of table, common salts, sodium chloride. Then magnesium, nuts, oilseed, pulses, whole grains, seafoods, dark green leafy vegetables, meat and fish. ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ if when you are going to plan a diet plan, when you are going to prepare a diet plan for a specialized persons or patients, then what kind of nutrients the patients will require, you have to prepare one diet chart including all these kinds of nutrients. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ nutrient deficiency ହୁଏ ବା any other required deficiency according to their age, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ sources ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଥିଲେ then we will added or included in their diet planning as this kind of nutrients. ଆମେ ସବୁ nutrients କୁ ସେଥିରେ add କରିବା. In addition to the nutrients we have already mentioned, fiber also has valuable role to play in the prevention of diseases. Fiber also play a very important role because of disease such as constipation and cancer of the colon. When you are taking lots fiber, not lots of fiber, not less of fiber. If you are taking fiber according to your calories, then the chances of constipation is reduced and the cancer of colon is also reduced. माने फाइबर भी गोटे प्रकार न्यूट्रिएंट्स, तो ताकू अधिका नेले भी प्रॉब्लम हबो, ताकू कम नेले भी प्रॉब्लम हुए. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାଲୋରି ଆକର୍ଡିଂଲି 10 to 20% ଆମେ ଯଦି फाइबर नेबा, then chances of constipation or colon cancer chance बहुत कम थाए. Then fiber is general term for substances which cannot be digested by the body and hence are not available. तो फाइबर गोटे nutrients who which cannot be digested by the body and hence are not available. तो it cannot be digested, से जमा digestion ही हुए नहीं, से जेमती जाए बॉडी रु सेमती तार न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होला परे से एक्सक्रेशन ने भी सेमती आसे. फॉर एग्जांपल आमे देखिबा गोटे गाय जेतेबेले घास खाए, घासटा हैला गुड सोर्सेस ऑफ फाइबर, तो से जेमिति जाए जो कलर र खाई थाए तो सेई कलर र तार देखिबे तार काउ डंग ता गोबर से कलर ही आसी थाए. ता माने फाइबर इज नॉट डाइजेस्टेबल, कैन नॉट बी डाइजेस्टेबल इन आवर बॉडी. तो से जेमती जाए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होला परे तो सी हमर जेते माने एक्सक्रेशन बहुत भल करे. जेमती स्टूल्स हैला, स्टूलटा जदि हमर ठीक परे माने कॉन्स्टिपेशन हैला तो हमर मोशन क्लियर हैलानी, तो फाइबर काम होला क्लींजिंग द बॉडी. तो से जेमती जाइथिबो सेमती बाहरी आसीबो इन द माने को टाइप रो ना स्टूल रे ही रिमूव हो जाए, एक्सक्रेशन हो जाए, माने वेस्ट मटेरियल है कि रिमूव हुए. तो कौन कहती ना वी हैव टॉक्ड अबाउट सम टाइप ऑफ फाइबर्स, जमती मु कहली टाइप्स ऑफ विटामिन ए, देन टाइप्स ऑफ फैट्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अच्छी,
तो कार्बोहाइड्रेट रे हमें देखिबा टाइप्स ऑफ फाइबर व्हिच इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट and example cellulose. However, they are non-carbohydrate form of fiber as well as. माने complex carbohydrate is known as fiber. Complex माने जोटा कि easily digestible नुहे, तो easily not absorbed in our body, it is known as complex carbohydrate. Simple माने which is easily absorbed by easily digest, which can be digested by the body, easily digested by the body, ଆଉ easily convert into glucose. Simple carbohydrate ଦି प्रकार carbohydrate ଅଛି, one is simple carbohydrate, another one is complex carbohydrate. Simple carbohydrate माने से कौन करे easily body रे digested हो जाए by the body, which is easily digested by the body and absorbed in the body and increases our glucose level. संगे संग digestion है कि absorb है गले कौन होगा ना sugar level टा संग संग बढ़ेगा. और complex है ला कौन ना complex is very much complex. तो से कौन करे बहुत धीरे धीरे से डाइजेशन हुए, जहाँ फल कि हमको बारंबार भोक लगे, आमर सेटाइटी लेवल विल बी मेंटेन बा भोक बारंबार जोटा लगे सेटाइटी वैल्यूटा, तो तापर आमर कौन हुए ना आमर भलरे माने सबू जाक जेन कन्स्टिपेशन से सब जिनस आमर रुहे कारण आमर मोशनटा क्लीयर हुए. तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आमर फैट्स डिपोजिट करेनी, सुगर्स लेवल को बढ़ाएनी कारण से बहुत कम्प्लेक्सली आमर डाइजेशन करे, which cannot be digested by the body, बिल्कुल डाइजेशन हुए माने which cannot be not easily absorbed in our body. सहजरे बॉडी एब्जर्व कर बहुत स्लो प्रोसेस रे इट विल एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी. तो सेति पई कि एटा हला हमरो कार्डियक बा हार्ट प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रोल हो, आउ ओबेसिटी हो, ए सब जो कॉमन हमरो कम्युनिकेबल डिजीजेस अछि सेति पई कि हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज गुड फॉर community persons, or nowadays it is more better than the simple carbohydrate. So simple carbohydrate to complex carbohydrate is more better due to our lifestyle disorder. जो long lots of lifestyle disorders are there, तो ସେଥିପାଇଁ complex carbohydrate is better than simple carbohydrate. तो complex carbohydrate है starch. The fiber containing food are helpful in controlling blood sugar level in diabetic patient. से कहली complex carbohydrate माने बहुत slowly digested by the body, so बारंबार भोक लगेनी कि आमर बॉडी रे सुगर डिपोजिट हो पारे कारण कन्वर्ट तो जल्दी हेनी, देन सुगर लेवल विल नॉट बी हाई है ना. सम फॉर्म ऑफ फाइबर सच एज गम, पेक्टिन, लिग्निन have a cholesterol lowering action. तो आउ गोटे फाइबर अच्छी गम अच्छी, पेक्टिन अच्छी, लिग्निन अच्छी, एटा सब कौन ना जोटा कि जो फाइबर गुड़ा टिके अठाड़िया थाए केमती ना भेंडी, देन से जो कौन मेथी से नाड़ थाए, तो जिते सब एडा सब नाड़ जिनस गम टाइप रो थाए, तो सेटा हला गुड टाइप्स ऑफ फाइबर. तो सेटा कौन करे ना सुगर लेवल को कंट्रोल ले रखे. गम, पेक्टिन, लिग्निन, म्यूसिलिनेज have a cholesterol lowering action से मानकर थाए due to their gum like structure. Then hence may be benefit in treatment of hyperlipidemia. Hyperlipidemia जेतोले cholesterol is more than 1200 mg per dl, 200 एभव हो जाए से आमको यही सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट हुए. गम, पेक्टिन, लिग्निन, म्यूसिलिनेज एक्सेट्रा. तापरे consumption of fiber containing food is associated with lower chances of suffering from constipation. तो consumption of fiber containing food जतले खाइबा, then it helps in relief or constipation. The constipation जो माने कर आजिकली it is a lifestyle disorder, तो सेथरे हमको fiber रा requirement अच्छी. Eating fiber rich आसीबो about, you have to write about what is fiber, types of fiber, you have to write about fiber. Fibers are of fiber is general substances which cannot be digested by the body, hence are not available. Okay, and you have to give types of fiber is complex carbohydrate is cellulose. However, these are non carbohydrate form of fiber.
non-carbohydrate form. It will not calculated in carbohydrate. So it is complex carbohydrate. And you have to write about complex. According to research, after research, the results will seem like complex carbohydrate controlling blood sugar level, and complex carbohydrate will control our cholesterol level, consumption of fiber containing food, lower chances of constipation. Eating fiber rich food may protect the individual against colon cancer. ଯଦି ଆଗରୁ ଫର୍ଷ୍ଟରୁ every day you have taken fiber, you have added fiber in your diet, then chances of colon cancer will be reduced. Okay, ଆଉ colon cancer ହେଲା ପରେ fiber ନେଇ ପାରିବେନି, but before ଯଦି practice ରଖିଥିବ of taking of fiber, then colon cancer chances will be reduced. Consuming a diet rich in fiber may help to induce satiety, माने भोक को कंट्रोल ले रखे, और ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, माने सबले फुलनेस फील हुए तो भोक लगेनी, एंड देयरफॉर प्रिवेंटिंग ओवर ईटिंग. जो माने ओवर ईटिंग करती जमती कि पढ़ाई आगुरु, हु आर सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल डिसऑर्डर, then they are craving of foods and they were taking foods many of times, which is known as overeating. सेतरे आपण obesity ही आसी जाए. तो सही केसेस रे when we will advise to hormonal disorders patients to take fiber in a daily routine, then they will prevent overeating. This can be implications for preventing obesity by extreme overweight. तो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च रो टाइप्स ऑफ स्टार्च रो क्वेश्चंस आसीबो है ना. देन पेज नंबर 218, salient features of dietary management of supportive measures of nutritional deficiency disorder. जेते न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अच्छी जितने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अच्छी, then how we will dietary management, what are the dietary management when the person is suffering from any nutrient deficiency. Protein energy malnutrition, it is a common questions in your exam. You have to write high energy feed is required. Then oral rehydration solution in case of mild to moderate diarrhea, and intravenous fluids in case of severe diarrhea. So in case of mild diarrhea, you should advise to take ORS solutions, and in case of very critical conditions, the intravenous fluids or RL solution will be advised. A high energy, high protein diet when tolerance improves for solid food. Then when the person or patient is tolerant to tolerance improves for solid food नवा पाई जेतेबेले से improve करिबो बा vomiting हो नथिबो, lose motions हो नथिबो, then you will advise high energy and high protein diet to the patient, because the patient is suffering from deficiency of protein energy malnutrition. You have to give high energy, high protein food. Then minerals and vitamins supplements also advised to the patients. Treatments associated conditions. Then about question will come, how will you manage the in case of anemia रे केमते dietary management करिबो. Promoting consumption of iron rich food कौन ना already we have discussed. Iron rich foods only comes from animal source of food. It will rest absorbed in it lesser than plant source of food. Plant source of food रो animal source of food रे बेसी iron थाए. तो to take meat, egg, fish, etc., and from in plant source you have to take pulses, green leafy vegetables, and all kinds colorful fruits and vegetables. Encouraging consumptions of vitamin C rich food. C rich C ro kamo hela, it absorbs iron in our body. Without vitamin C, iron cannot be absorbed in our body.
Vitamin C rich food such as orange, guava, amla, etc. with meals as it promotes iron absorption. So with the iron food, you have to take vitamin C rich foods in the same time. एका समय रे जेतबेले आपण आयरन रिच फूड खाउछंती ता सहित यू हैव टू टेक दिस विटामिन सी रिच फूड जेतबेले आपण नॉन वेज आइटम्स पल्सेस ए सब खाउछंती देन यू टेक वन लेमन ओके and in case of any kinds of vegetables items or any other items then we will take fruits with the iron rich food. Vitamin C rich food with iron rich food, then it will easily absorb in our body. If dietary management alone is not adequate, then our oral iron supplementation in the method of choice. तो oral iron जदि बहुत anemic थिबो the hemoglobin is lesser than 8 mg per dl, then you have to advise dietary management as well as with oral supplementation iron tablets दबाकू पड़िबो. Okay. Then केमती दबा ना pregnant and lactating women are recommended 100 mg elemental iron. आमर mg आसे tablets रो तो 100 mg elemental iron प्रेग्नेंट लैक्टेशन समय रे ततला आयरन डेफिशिएंसी हुए बा एनीमिक हे जानती से केसेस रे दबा एंड फॉलिक एसिड दबा 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड डेली एटलीस्ट फॉर 100 डेज जहाँ भी आम सप्लीमेंटेशन दबा फूड दबा एडवाइस करवा तो पेशेंट्स निश्चिंत क्वेश्चन अराइज कर हाउ मेनी डेज आई विल कंटिन्यू दिस फॉर एनीमिया एनीमिया पे आम केते दिन आपको कंटिन्यू करूँ केते दिन ये खाद्य खाइबू केते दिन आपको खाइबू तो यू हैव टू से यू कंटिन्यू इट फॉर 100 डेज okay 100 days means 3 months is 90 days and 3 months 10 days you have to continue your taking iron rich food as well as oral supplementation iron supplementation okay 100 mg iron and 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड डेली है ना 100 mg रो हम आयरन खाइबा 500 माइक्रोग्राम में फॉलिक एसिड डेली खाइबा फॉर 100 डेज स्टार्टिंग इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट आसवे से फास्ट ट्राइमेस्टर जोटा रहे 3 मंथ्स तो से आयरन रो आवश्यकता न थाए बिकज फिटस इन इज लिक्विड फॉर्म कारण फिटसटा आमर लिक्विड फॉर्म रे थाए तो आफ्टर 3 मंथ्स जो सेकेंड ट्राइमेस्टर आरंभ हम से विल एडवाइज टू गिव to take iron rich food with vitamin C with oral iron supplementations of 100 mg of iron and 50 mcg of 500 mcg of folic acid for 100 days. Then second trimester ru amaro iron folic acid start he jaye for 3 months of lactation तो सेटा चलथिबो lactation जाए. Then after प्री स्कूल चिल्ड्रेन 1 to 5 years जोटा प्री स्कूल चिल्ड्रेन रोचंती तो 3 to 6 years आर गिवन 20 mg ऑफ आयरन तो आमे जेतेबेले प्री स्कूलर चाइल्ड मानकर आयरन रिक्वायरमेंट बहुत थाए तो तांको आमे 20 mg आयरन दबा 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड दबा और सेटा केतेबेले ना वर्षे रु 5 वर्ष भितरे आमे वीकली दबा है सप्ताह सप्ताह को 20 mg आयरन 100 mcg folic acid. Control of hookworm or other infestations and malaria can also be undertaken where necessary. खाली आयरन डेफिशिएंसी आमर एक्सीडेंटली ब्लीडिंग ए सब केसेस रे हुएनी जेतेबेले कि आमको किछि इन्फेक्शन हैला बा आमर जेमति हुकवर्म हैला किछि ओर्म आम बॉडी रे पिल छुआ मानको बॉडी रे रहे आ मलेरिया बहुत दिन रहिला कि कोनोसी प्रकार डेंगू चिकनगुनिया ये सब जिनसटा देखागला तो लॉन्ग टर्म जदि किसी फीवर रहिला देन ऑल्सो इट शोज एनीमिया तो कौन ना सेतबेले भी रक्तहीनता हो जाए बा एनीमिक हो जाती तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल एडवाइज टू टेक आयरन रिच फूड विथ विटामिन सी ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू दर एज तांको एज जदि चाइल्ड थिबे देन यू विल एडवाइज टू टेक 20 mg आयरन 100 mcg folic acid weekly once till 5 years or in case of pregnant lactation you have to advise 100 mg iron and 500 mcg folic acid
है एवरी डे फॉर एटलीस्ट 100 days. ओके तापरे this can be achieved by improvement in environmental sanitation and personal hygiene. जदि आमर हाथ पानी खाद्य जदि एनी इन्फेक्शन विल एंटर इन आवर बॉडी जदि हाथ धोई नथिबो अपरिष्कार हाथ थिबो हला हाइजेनिकली आम मेंटेन करू नथिबो तो खाईदेलु तो जेतेबेले से एंटर कला इन आवर बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट आयरन डेफिशिएंसी बा हिमोग्लोबिन आरबीसी सेडा सब डिस्ट्रॉयड हो जाए ओके से कि फर्स्ट हमें एनवायरमेंटल वी विल कीप आवर एनवायरमेंटल क्लीन परिवेश क्लीन रखिबा एज वेल एज विथ आवर पर्सनल हाइजीन देह सफा रखिबा बॉडी माने क्लीनलाइनेस रखिबा माने पूरा सफा ड्रेस पिंधिबा तो क्लीन रखिबा गुड फूड प्रैक्टिसेस माने भल खाद्य खाइबा बासी खाइबानी से एनीमिया हबार चांस बहुत थाए इन्फेक्शन पे इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म इलनेसेस है ना ब्लीडिंग एनीमिया जो हमर लैक्टेशन प्रेगनेंसी ए सब रे हुए तापरे पढ़िबा विटामिन ए डेफिशिएंसी एटा सब पढ़िबो क्वेश्चन how will you manage anemia in dietary management केमते मैनेज करबे dietary management in case of anemia you have to write the dietary source ଆଉ ତାର तापरे आयरन ओरल सप्लीमेंटेशन केते नबा कथा एमती लिखिबे देन विटामिन ए डेफिशिएंसी विटामिन ए डेफिशिएंसी रे चिल्ड्रन विथ एक्टिव कोरोनियल साइन जोड़ा थिबे and corneal gerosis, corneal ulcerations, keratomelastia, severe ill or malnourished child with any sign of geropathalemia or coming from a community where geropathalemia occurs. तो देखिबा विटामिन ए डेफिशिएंसी टा मोस्टली सीन इन चिल्ड्रेन छोट पिलांग धीरे देखा जाए एंड सेटा कौन हुए ना आखि रे गोटे साइन बिटर स्पॉट भलिया रहे आउ केरोटोमेलासिया माने पूरा कंप्लीट ब्लाइंडनेस आउ कोरोना रे अल्सर हे थाए सिवियरली इल्ड और मालनरिश चाइल्ड with any sign of geropathalemia or coming from a community where geropathalemia occurs. तो से community रे vitamin A deficiency होतबो तो in that area that community then geropathalemia will occur due to the vitamin A deficiency. तेबे आमे ताको कोन एडवाइस करिबा आउट पेशेंट गिव इमीडिएटली टू चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर जो माने को 1 ईयर क्रॉस करी जाइथबो 2 lakhs इंटरनेशनल यूनिट इन ऑयल गिवन ओरली माने आमे ओरली पार्टी रे दबा 2 lakhs इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए और वाटर मिक्सेबल प्रिपरेशन गिवन इंट्रामस्कुलरी एटा ऑयल टाइप रो कारण जेहेतु विटामिन ए इज ऑयल सॉल्युबल विटामिन तो ऑयल कंसंट्रेटेड जोटा रहुची 200 इंटरनेशनल 2 lakhs इंटरनेशनल यूनिट आफ्टर 1 ईयर तो दबा बा इंट्रावेनसली जदि इंट्रामस्कुलरी हम ताको दोचु मिक्सेबल प्रिपरेशन इन्फेंट हला हाफ द डोज ऑफ चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर 1 ईयर को हमको 2 lakhs इंटरनेशनल यूनिट देलु किंतु जदि इन्फेंट थिबो बिलो 1 ईयर थिबो then we will half the doses of the 1 year half mane 1 lakh international unit daba examine the child again after 1 week then we will examine the baby for 1 week then inpatient immediately 1 lakh international unit will given to the children in second day 1 lakh international unit orally or to all children on discharge 2 lakhs international oil solutions given over 1 year below 1 year you will give 1 lakh international unit of vitamin A and after 1 year कौन करिबा 2 lakhs international unit of vitamin A for children with non corneal sign जहार ए सब जेरोपैथोलेमिया अल्सर जो आखि भितर सब अल्सर हवा ए सब जिनस साइन जहार नथिबो जेरोपैथोलेमिया नाइट ब्लाइंडनेस कौन से आखिर किसी प्रॉब्लम नथिबो नो सिवियर इलनेस
बट फ्रॉम कम्युनिटी वेयर जेरोपेथेलेमिया अकर्स किंतु किसी भी साइन नथिबो से पिलार बट वेयर द चाइल्ड इज कमिंग फ्रॉम दैट कम्युनिटीज आर स्प्रेडेड विथ जेरोपेथेलेमिया तो सही केसेस रे मते नबा को पड़े 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओवर 5 इयर्स 5 वर्ष पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दबा आ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट टू द लेस देन 1 ईयर द डोज कैन बी रिपीटेडली सब 6 मंथ्स रे दिया जीवो धर जन्मर 6 मास रे हमें फर्स्ट 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए देलु पुणी 1 ईयर बेलू को आम देदेबा पुणी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट तापर 1.5 हला बेलू मोर देन 1 ईयर जोटा 1 ईयर रे भी दिया जाए हमरो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 6 मास रे हमरो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 1 ईयर रे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पुणी 1.5 रे से 2 लाख इंटरनेशनल सब 6 मास 5 वर्ष जाए तांको विटामिन ए दिया जीवो ओके खाली इन्फेंट्स मानकू लेस देन 1 को खाली 1 लाख दिया जाए बाकी आफ्टर 1 ईयर हो गला पर 1 ईयर ऑनवर्ड रे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स एवरी 6 मंथ्स रे तांको 5 वर्ष जाए देले तांकर किछि भी माने जेमती जेरोपैथेलेमिया नाइट ब्लाइंडनेस कॉर्नियल अल्सर एडा सब आखिर प्रॉब्लम एडा हुएनी For mother who have just delivered babies who plan to breastfeed or pregnant women from a community where geropathemia occurs, 3 lakhs international units oil solutions oral बा single dose रे दिया जीवो काहाकू ना माने एटा छुआ मानक पय हे गला 5 वर्ष जाए प्रति 6 मास रे से 1 लाख फास्ट नेबे तापरे 2 लाख सब तांगर चलिबो 5 इयर्स जाए एवरी 6 मंथ्स रे बट इन केस ऑफ मदर हु हैव जस्ट डिलीवर्ड बेबीज हु प्लान टू ब्रेस्टफीड और प्रेग्नेंट वुमेन फॉर ए कम्युनिटी वेयर जेरोपैथेलेमिया अकर्स तो सेटा जे एंडेमिक तांको एरिया रे हेथिबो कम्युनिटी रिलेटेड जेरोपैथेलेमिया डिजीज then the mother will take 3 lakhs international unit of vitamin A solution oral in a single dose आउ नपनी only single dose 3 lakhs international unit रो नहीं जीवो ହେଲା vitamin A deficiency ଆସିଲେ of the dietary management ଆସିଲେ you have to write dietary management रे vitamin A रो लिखि देबे retinol हैला animal sources of vitamin A fish meat egg yolk ए सब लिखि देबे ऑयल फैट्स बटर एडा सब लिखिबे आ प्लांट सोर्स रे येलो ऑरेंज ग्रीन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल तापरे लिखिबे ए जो सब हमरो जो इम्यूनाइजेशन बा वैक्सीनेशन रे ए जिंस को रखिबे टू कंट्रोल बा मैनेजमेंट ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी रे बोथ डाइट जीवो प्लस ता सहित हमरो सप्लीमेंटेशन भी हबो ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन ओरल विटामिन ए सप्लीमेंटेशन सेडा सब चलिबो आयरन डेफिशिएंसी रे एटा तीनटा जाक इंपोर्टेंट गोटे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन गोटे एनीमिया गोटे विटामिन ए डेफिशिएंसी आ गोटे हला आयरन डेफिशिएंसी which is common deficiency disorder in our community तो कम्युनिटी रे हमरो प्राय एतिकी डेफिशिएंसी रहे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन को थरा देखा जाए एनीमिया हमरो प्रेग्नेंट लैक्टेशन आ पिलांको प्री स्कूलर रे देखा जाए विटामिन ए टा हमरो छोट छोट इन्फेंट को आरंभ करी 5 वर्ष जाए पिलांको देखा जाए आयरन डेफिशिएंसी हमको देखा जाए चाइल्डहुड टू एडल्टहुड जाए तो कंजप्शन ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी रे कौन एडवाइस करेंगे यू हैव टू कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट जो आयोडाइज सॉल्ट आसुची कॉमन माने नॉर्मल सॉल्ट्स टू यू हैव टू एडवाइस टू टेक आयोडाइज सॉल्ट इंजेक्शन ऑफ आयोडाइज्ड ऑयल द ऑयल शुड बी इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलरी एवरी 3 to 4 years इन चिल्ड्रेन पिलांकर 3 ରୁ 4 वर्ष बयस भितर तो से माने आयोडाइज्ड ऑयल जोटा रहउची आयोडीन रिच्ड ऑयल इंट्रामस्कुलरी इंजेक्शन दिया जाए एंड एडल्ट्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग डोजेस 0 ରୁ 12 मास बा वर्षक भितर 0.5 ml ऑयल कंटेनिंग 37% बाय वे ऑफ आयोडीन तो 0.5 ml आयोडीन ऑयल टा दिया जाए वर्षक छुआ भितर आउ वर्ष ରୁ 45 वर्ष जाए 1.0 ml कंटेनिंग एतिक वेट ऑफ आयोडीन 1.0 ml दिया जाए आफ्टर 1 year to 45 years जाए आउ 0 to 12 years दिया जाए 0.5 ml आयोडीन ऑयल दिया जाए
and thyroxine preparation in the form of tablet. ता छड़ा हमरो adult food ଯେତେବେଳେ 1 year ପରଠୁ ଆମକୁ iodine deficiency ବାହାରିଲା, then we will advise to take thyroxine hormone as prescribed by the medical practitioner ବା doctor. Doctor advise କରିବେ ଆମେ iodine salt ଦବା, सी फूड सोडा भी rich in iodine, तो सी फूड सोडा, सी फूड है सी फिश ଆଉ କ୍ରାବ୍ ପ୍ରନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆୟୋଡାଇଜ୍ଡ ସଏଲ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ସ ହେଉଥିବ, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଡାଇଜ୍ ସଏଲ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହୁଏ, ଇଟ୍ ଅଲସୋ କଣ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆୟୋଡିନ୍। ତ ଏଇସବୁ ଲେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ସ ଅର୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍। ହେଲା ଏମିତି ପୁରା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଅଦର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ବେରିବେରି, ଗୋଟେ ହେଲା ପେଲିଗ୍ରା, ଗୋଟେ ଆରିବୋଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ସ and rickets। ଏଟା ସବୁ वन वर्ड आंसर पड़िबो and also short answers भी पड़िबो। वन वर्ड जदि पढ़ला माने थायमिन deficiency disease, which what is thiamine deficiency disease लिखिले you have to write thiamine deficiency हेले कौन हुए ना, थायमिन डेफिशिएंसी हेले बेरी बेरी हुए। एंड नियासिन हेला, थायमिन हेला हमर कोन B1 आ बी विटामिन 2 नियासिन सेटा हेला पेलिग्रा हुए। आउ B3 रिबोफ्लेविन हेले आरिबोफ्लाविनोसिस माने जो कड़ा सब खाई जाए। आउ डी डेफिशिएंसी हेले हमें रिकेट्स हुए। एटा वन वर्ड आंसर आसीबो, आपण माने मन रखिबे। B1 हेला थायमिन डेफिशिएंसी रे बेरी बेरी हुए, B2 नियासिन डेफिशिएंसी रे पेलिग्रा हुए, and B3 deficiency riboflavin रे ariboflavinosis हुए, and D deficiency रो rickets हुए। वो छुआ को rickets हुए, adults को osteomalacia हुए। ता मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट लिखले विटामिन B1 थायमिन हला हमको कौन हुए ना, सब सीरियल्स आउ स्प्राउट्स पल्सेस हला ए सब जिंस बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट एडा सब मिलेबो। आउ पेलिग्रा नियासिन हला B2 डेफिशिएंसी बा पेलिग्रा niacinamide supplements and B complex tablets। तो मैनेजमेंट विथ मेडिसिन लिखुची। तापरे आरिबोफ्लाविनिस बा रिबोफ्लाविन डेफिशिएंसी हेले बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट जो पार्टी कड़ खाई जाए तो हमें बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स ही नौ। and D deficiency हेले cod liver oil preparation, vitamin D concentrate, expose your body to early माने सनराइज जोटा नबा कथा 10 to 20 minutes। ता छड़ा हमको ऑयल सोर्सेस ऑफ विटामिन डी नबा को पड़े, फिश मीट मिल्क आउ गोटे रहिला एग बटर घी एक्सेट्रा। कॉमन फूड डिजीजेस हाँ एबे पढ़िबा ब्लॉक 4 फूड ब्रॉन डिजीजेस, फूड इन्फेक्शंस एंड इंटॉक्सिकेशंस। कॉमन फूड ब्रॉन डिजीजेस ओडा कौन? What are the common foodborne diseases? Common food diseases ଦୁଇ parasitic infections, food infection, intoxications। ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବା food infections ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, food allergics ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, food intoxications ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। फर्स्ट आम देखा टर्मिनोलोजी गुड़ा कौन, टेक्निकल टर्म सब कौन यूज हुए। इन्फेक्शंसटा कौन? इन्फेक्शंस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शंस एंड डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन इन्फेक्शंस एजेंट in the body of man or animal। Infection need not always means infectious disease। The infection sometimes may be inapparent without any recognizable clinical signs and symptoms। This is also known as subclinical infections। Infections माने हला any microorganism it will enter through our mouth from food, water and with hands। हाथरू खाद्यरू पानीरू बहुत सहजरे माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर इन आवर बॉडी एंड व्हेन इट विल मल्टीप्लाइज इन आवर बॉडी, जेतेबेले बॉडी रे से मल्टीप्लाई हुए है ना,
lack of immune lack of ଆମର କ'ଣ lack of or immune response ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ multiply in our body. It is known as infections. Infectious disease କ'ଣ? A disease of man or animal. ପଡ଼ିବ ଏଇଟା one word. What is infection and what is infectious disease? A disease of man or animal resulting from an infection. The person suffering an infection disease exhibit clinical signs or symptoms from which one can diagnose the disease. तो तार गोटे when the infection is multiply in our body, microorganism or virus, bacteria, etc. parasites are developed or increased or multiply in our body, ସେତେବେଳେ some signs symptoms are seen. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି ବଡ଼ିରେ ପୁରା multiply ହେଇକି spread up ହୁଅନ୍ତି, then some signs symptoms are seen ହେଲା। ତ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ବଡ଼ିରେ କିଛି ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଏ। ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମର ବଡ଼ି ଟେମ୍ପରେଚର ୱିଲ୍ ବି ରାଇଜିଂ ମାନେ ଫିବର ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେନ୍ ଯଦି ବେଶୀ ହେଲା ଦେନ୍ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହେବ। ଆମର ମୋସନ୍ର ପୁରା ସେ ବଡ଼ିରୁ ଆମର ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ଆମର ଯେଉଁ ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତ ସେଇଟା ବି ଲସ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଇନ୍ ଆୱାର ବଡ଼ି ଦେନ୍ it will arise some sign and symptom. तो ଯେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲେ ସେ କିଛି ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଏ କି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଂ ଇନ୍ ଆୱାର ବଡ଼ି। ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆମ ବଡ଼ିରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖେଇବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫିବର, ଟେମ୍ପରେଚର ଗେନ୍ କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ କରିବ, ମିନେରାଲ୍ସ ଲସ୍ କରେଇବ। ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଭମିଟିଂ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଫ୍ ହେଲା। ଏସବୁ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖେଇଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମ ବଡ଼ିରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍। ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଦେଖେଇବ। ଯଦି ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ଆମର ଲଙ୍ଗସର ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ବା କାଶ, ନିମୋନିଆ, କଫ ଏଇସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଦେନ୍ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଚିଫଲି ଏ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କହନ୍ତି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଏଜେଣ୍ଟ that is capable of producing an infection or infectious disease. Most of the infections are caused by bacteria or virus which cannot be seen by a naked eye. So it cannot be seen in naked eye. So ଆମ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଯୋଉଟାକି ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏନି will easily enter in our body. Require either simple sophisticated microscope to see him. Infestation माने कौन ना presence of animal parasites either on the skin or inside the body. Infestation माने ଯେତେବେଳେ animal parasites ହଉ କି ଆମର ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଟା either on the skin ରେ ରହୁ ନହେଲେ inside the body ହଉ ତାକୁ କୁହନ୍ତି infestation। ମାନେ already enter କରିଗଲାଣି ହେଲା। incubation periods ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ନା interval between exposure of infectious agent and appearance of the first sign of symptom of the disease in question। ତା ମାନେ incubation periods ମାନେ ତାଙ୍କର spreading ର time ଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ enter in our body, when the microorganism is enter in our body, then appearance of the first sign of symptom ଦେଖେଇବ। ଯଦି enter ହେଲା ତେବେ ଆମକୁ ଫିବର ଦେଖେଇଲା, ବହୁତ ଫିବର ହେଲା ବା ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ହେଲା ବା ଆମ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ସ ହେଲା, ତ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖେଇଲା। and on that time डेवलपिंग ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଟା ହେଲା ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼। ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ଆମକୁ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଏ। ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଟାଇମ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍ କ'ଣ? ଆନ୍ ଇଲନେସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ or toxic product which arises through transmission of an agent of his product from a reservoir or a susceptible host either directly as from an infected persons or animals or indirectly through an intermediate plant or animal host vectors of the intimate environment। तो communicable diseases ହେଲା ଗୋଟେ illness, तो ସେଇଟା infectious agent or toxic product which arises through transmission of the agents of his product from a reservoir susceptible host। ତା ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ infected personର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ
ମାନେ ତାର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେମିତି ତାର ୟୁଜ୍ଡ ଫୁଡ୍ ବା ସେ ଖାଇଥିବ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଖାଇବା ବି ତାର ୱାଟର୍ ବୋଟଲ୍ରେ ପାଣି ପିଇବା ବା ତାର କିଛି କ୍ଲୋଥେସ୍ ଯୋଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ସେଇ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ସେ ଯଦି ମାନେ ଧର ତାକୁ କଫ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ହେଇଛି, ସେଇ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ଟୁ ସ୍କିନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ଯେମିତିକି ଆମର ଆସ୍ଥମା ଗୋଟେ, ଟିବି, ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସି ଗୋଟେ, ତ ଏଇଟା ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ମିଜଲ୍ସ, ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଭାଇରସ୍, ଯେଉଁଟା ଭାଇରସ୍ରୁ ହୁଏ ସେଇଟା କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରିଆ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି, ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍, ତ ସେଇଟା ସବୁ ଆମର ୱାଟର୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ସ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ଆମର ୱାଟର୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍, ସଏଲ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ସେଇଥିରେ ମିକ୍ସ ହେଇକି ହୁଏ। ଲେଖା ହେଇଛି person suffering from TB is likely to contact catch the disease and malaria is transmitted by mosquitoes ହେଲା, vectors of malaria। तो ये सब है communicable disease। You have to write the definitions as well as you have to give the examples also। तापर reservoir और infectious agent कौन, and any human being, animals, plants, soil or inanimate matter in which an infectious agent normally lives and multiplies and on which it depends primarily for survival and reproducing itself in such a manner that it can be transmitted to a suspectable host। तो से लिखिला रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट माने कौन ना, जो थे कि इनफेक्शियस एजेंट्स गुड़ा सहजरे मल्टीप्लाए हो जाती आ स्प्रेड ऑफ हो जाती। प्राइमरी सर्वाइवल रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इज ए मैनर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ए सस्पेक्टेबल होस्ट। तो सेठू जमती कि गोटे मशा एफेक्टेड पर्सन को, मलेरिया एफेक्टेड पर्सन को गोटे मशा कामुड़ा एंड से ही मशाटा जाकि आउ गोटे हेल्दियर पर्सन को कामुड़ा, then reservoir of infectious agents है सेमाने। In case of the infectious disease, you will learning man is a reservoir। These are like water reservoir where water is stored and it is distributed later। In case of reservoir of infection, disease agent is harbored and transmitted to other है ना। से पानी रे धर सॉइल रे सबू ସେଇଠି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି କି ହୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଯାଇ ପାଣିରେ ମିଶିଲା, ସେ ପାଣିଟାକୁ ୟୁଜ୍ ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜର୍ଭିୟର। ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଜର୍ଭିୟର, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭିୟର, ଏଇଟା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ହୋଷ୍ଟ ହେଲା ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ, ଆନିମଲ୍ or other living animals, bird, insect which have food substance in infectious agent under natural condition। ହୋଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଧର ମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ତାର ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସି ଅଛି, ତ ସ୍କିନ୍ ଟୁ ସ୍କିନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ବା ବହୁତ ପାଖରେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ନ ରହିକି ପୁରା ସ୍କିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ବା ଏୟାର ବର୍ନରୁ ଯେଉଁଟା ପାଖରେ ରହିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ସେତେବେଳେ ତା ବଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍। ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମସ୍କିଟୋ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନକୁ କାମୁଡ଼ିକି ହେଲ୍ଦିୟର ପର୍ସନକୁ କାମୁଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଇନସେକ୍ଟ ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟ ହେଲା ହେଲା। ଆନିମଲ୍ସ ବି ସେମିତି ହୋଷ୍ଟ ହୁଏ, ବାର୍ଡସ୍ ମାନେ ହୋଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲା ହୋଷ୍ଟ, ବାହକ। तापर आमे देखिबा suspectable। A person or animal is suspectable when has not acquired immunity to a particular disease by a previous infection or vaccination and thus is liable to contract a disease if exposed to such an agent। तो suspectable माने by previous infection or vaccination thus is liable to contract a disease if exposed to such an agent। तो सस्पेक्टेबल केमती हम ना, गोटे घरे आमर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स आर देयर, तो सी जितेबाला से स्नेचिंग, कफिंग, टकिंग ये सब द्वारा ड्रपलेट्सटा फैमिली मेंबर्स बा जो मैंने गोटे घरे रोचंदी, तो से सस्पेक्टेबल। तो मे भी से वायरल इन्फेक्शंस हो पारे।
It is known as susceptible. Okay. Then communicable period, the time or times during which an infectious agent may be transferred directly or indirectly from an infected person to another person, from an infected animal to a man. तो से कुछ कम्युनिकेबल पीरियड्स गोटे थाए जेमती आइसोलेशन टाइम अच्छी 7 दिन 21 दिन एक्सेट्रा तो से टाइम रे जोटा हमर इंक्यूबेशन पीरियड्स रे हमर सेटा हला कम्युनिकेबल पीरियड तो infection will spread to animal to birds, then animals to man, man to animals, etc. Then what is question will come, what is epidemic and what is endemic? Epidemic कौन? It is occurrence in a community or a region of case of an illness or a disease outbreak clearly in excess of normal expectancy arising from a common or propagated source. Even a single case of communicable disease long absent from a population is to be considered sufficient evidence of epidemic. এটা কোন হচ্ছে ଗୋଟେ কম্ୟୁନିটিରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡାଇରିଆ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା ହେଲା ନର୍ମାଲ ଆମେ ଯେତିକି ନର୍ମାଲ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ତ ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲା ଦେନ୍ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଏପିଡେମିକ୍ ହେଲା ଆଉ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ କାହାକୁ କହିବ ଏ ଡିଜିଜ୍ ଅର୍ ଇନଫେକ୍ସସ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ୱିଦିନ୍ ଏ ଗିଭନ୍ ଏରିଆ ତ ସେଇ ଏରିଆରେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାପିଥିବ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯୋଉଟା ପୁରା ଡାଇରିଆରେ ପୁରା ସବୁ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ସେଇ ଏରିଆରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି ବଟ୍ ଏପିଡେମିକ୍ ହେଲା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ ଏ ରିଜନ୍ ଅର୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇସବୁରେ ମାନେ ହୋଲ୍ ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଏରିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଇଥିବ ତ ସେଇଟା ହେଲା ଏପିଡେମିକ୍ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଗାଁରୁ ସେଇ ଗାଁ ସେଇ ଗାଁରୁ ସେଇ ଗାଁ ସେଇ ଗାଁରୁ ସେଇ ଗାଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଏପିଡେମିକ୍ ବଟ୍ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ଯୋଉଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଯୋଉଟା ତାକୁ କହନ୍ତି ଏଣ୍ଡେମିକ୍ क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज एपिडेमिक व्हाट इज एंडेमिक देन फिकल रूट ऑफ इन्फेक्शन हमर फिकल रूट इन्फेक्शन फिकल ओरल रूट इन्फेक्शंस कोन in certain diseases the infective agents are excreted in the feces enter the body through mouth mechanism transport the agent feces to mouth widely माने से कहूँ फिकल ओरल रूट इन्फेक्शंस आमर केमिति हुए तो सेटा कौन हुए ना एक्सक्रीटेड जो इन्फेक्टिव एजेंट्स एक्सक्रीटेड इन द फिशेस धर को जन को डायरिया डिसेंट्री होती से गोटे ओपन प्लेसेस रे एक्सक्रेशन बा स्टूल माने माने स्टूल कला तो से जो एक्सक्रीटेड फिशेस अच्छी एंटर द बॉडी by mouth mechanism for transfer of agent from feces to mouth even widely are often not known तो से कौची आमर कौन अच्छी ना सॉइल माने आमर धर से ओपन प्लेसेस रे से स्टूल पास कला तो तापरे सेटा धीरे धीरे पानी रे मिसला तो तापरे से पानीटा को गोटे ह्यूमन बीइंग यूज कला तापरे आमर इन्फेक्टेड पर्सन रो हैंड की हो ड्रेस हो कप स्पून है ये सब जिनस गुड़ा जदि तुम यूज कल तो कहते फोमाइट्स आर यूज प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स तो से थ्रू फिकल ओरल रूट इन्फेक्शन स्प्रेड हुए तो स्किन टू स्किन कंटाक्ट है आम फूड को धरले खाइले तो से भल आमर इन्फेक्शन स्प्रेड है कहते फिकल ओरल रूट इन्फेक्शन देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन ना क्लिनिकल साइन सिम्पटम्स को कहते क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो क्लिनिकल साइन सिम्पटम्स रो हमें जानिबा वी शुड डायग्नोज द डिजीज हमें डायग्नोसिस करबा कि एक्चुअली क्लिनिकल रे जदि पूरा झाड़ा होची पतला हो जाइए तो आम कहूँ ताको ही इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया जदि क्लिनिकल साइन रो फीवर होची देन ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड फीवर और मलेरियल फीवर डेंगू फीवर ता क्लिनिकल साइन सब कहबो है ना तापरे सेटा हला कैरियर हला बाहक persons who harbor pathogenic microorganism specific infections manifest sign and symptom of disease able to infect other individuals है ना तो सेरोलॉजिकल टेस्ट हला आमे एतले ब्लड सेरम रु टेस्ट करिवा ताको को टाइप रो फीवर अछि सेथरे बाहरिबो
टाइफॉइड पॉजिटिव अच्छी है डेंगू एंटीजन टेस्ट करवा से आसो पॉजिटिव डेंगू बोली तो आमर सेरोलॉजिकल टेस्ट इज वेरी मच नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स व्हिच काइंड ऑफ डिजीजेस ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम है आउ जदि एमती खाली साइन सिम्पटम्स तो जानी परिबानी साइन सिम्पटम्स पर आम सेरोलॉजिकल टेस्ट इज इम्पोर्टेंट तो यही सब जिनस कॉमन फूड ब्रन इलनेसेस बा कॉमन फूड इन्फेक्शंस रु आमर पैथोजेन्स केमती एंटर करी कौन कौन डिजीज क्रिएट करुच्ची वी विल रीड इन यूनिट 11 कॉमन फूड ब्रन इलनेसेस then diarrhea dysentery cholera are the major causes of sickness and death mostly among children बेसी चिल्ड्रेन कथारे डायरिया डिसेंट्री कॉलेरा देखा जाए इन ऑलमोस्ट ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज इज ईयर एस्टिमेटेड 2.5 बिलियन केसेस ऑफ डायरिया अकर एमंग चिल्ड्रेन अंडर 5 इयर्स ऑफ चिल्ड्रेन रे बेसी डिसेंट्री डायरिया कॉलेरा देखा जाए এটা অলরেডি পढ़ा है कॉमन फूड इलनेसेस वाला डायरिया डिसेंट्री ଏବେ ପଢିବା कॉमन फूड ब्रन डिजीजेस 2 पढ़ा है यूनिट 13 टा देखिबा पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस कारण फर्स्ट क्लास रे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट dysentery diarrhea cholera typhoid and hepatitis how will you manage them how will you maintain preventive measures आमे ताकू केमिति कंट्रोल रे रखिबा द प्रिकॉशनल्स मेजर्स कोन नबा मु ऑलरेडी पढ़ी सारछि फर्स्ट क्लास रे तो डायरिया डिसेंट्री सबू आमर डायरिया डिसेंट्री सब बैक्टेरियल इन्फेक्शन रु हुए पानी कंटामिनेशन रु हुए हैंड हाइजीन आ गोटे है एनवायरमेंटल सैनिटेशन इटा जदि आमर एनवायरमेंटल सैनिटेशन ठीक नथिबो हैंड हाइजीन आल्सो वेरी बैड तो सही केसेस रे हमको ए भलिया डिजीज जडा हुए जोटा वाटर ब्रोन इलनेसेस ताको कुआ जाए पानी द्वारा आम बॉडी रे इन्फेक्शन स्प्रेड हुए है तो तार आमे लिखिबा कि आमे ताकू लॉट्स ऑफ जतले डिसेंट्री डायरिया कॉलेरा होची सेतबेले डिहाइड्रेशन बा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होची यू हैव टू एडवाइस टू टेक लॉट्स ऑफ वाटर लॉट्स ऑफ फ्लूइड इन ए डे बहुतडा पानी पीबा विथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रे हमको कॉमन सोडियम क्लोराइड बा कॉमन सॉल्ट ता संगे रे पोटेशियम रे लेमन आ पानी ए भलिया करी के चीनी मध्य मिसा जाए फॉर कैलोरीज पई तो वी हैव टू प्रिपेयर वन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस एंड ताकू धीरे 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 दिन सारा अल्प अल्प कर दबाक पड़े देन स्टार्ची आउ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आम ताकू दबा इफ द पर्सन इज टॉलरेट तो जदि पर्सन टॉलरेट करुच्ची सॉलिड फूड को देन वी विल गिव
such kinds of high calorie rich food that tolerate karuni, the liquid and semi solid items we will advise to take. तापर vaccinations नबाकू पड़े आउ सब hand hygienic ये सब जिनस को follow करिया को पड़े. Then we will study about unit 13 parasitic infestation. Parasite केमती हमरो infestation मु कहि छि already when the microorganism already entered in our body that can be infestations. Okay, parasites are the organism who live within or upon other living organism, human being or animals, or deriving shelters or nourishment from them. Due to the poor hygiene, lack of basic sanitary amenities, certain parasitic infestations are common in our country. Our countries रे very common parasitic infestations हुए कहीं कहला आमर बहुत माने ड्यू टू lack of awareness and lack of health education. तो आमर ए parasite infestations टा very common in our country. तो सेति पई कि ड्यू टू पुअर हाइजीन तो आम हाइजीन मेंटेन करनी सेठी खाइबू सेठी माने स्टूल छुआ माने स्टूल सबू सेठी झाड़ा फेरुथिबे तो सेठी खाउथिबे खाइबा बनौथिबे सेठी माछी बसुथिबे सेठी चारिआडे असना माने घर चारिकड़ पड़िथिबो. तो एइथिपाई कि हमकू parasitic infections are बहुत important माने commonly spread in our country due to poor hygiene, lack of basic sanitary amenities. तो sanitary amenities माने hand wash हो ହେଲା कि नीट सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो ए सब जिनस गुड़ा हमर आम सेटा को बेसी ध्यान दे न था. तो some common animal parasites that affect human beings include tapeworm, hookworm, roundworm, pinworm, विभिन्न प्रकार worm अछि. तो से जो बहुत ये रे हमको माने हैंड हाइजीन पुअर पाई कि बास अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर सेफ नथिबो ड्रिंकिंग वाटर असना पानी तो सेही थ्रू रे हमको पैरासाइटिक एंटर हो जाय थाए बॉडी रे. तो सेटा टेपवर्म, हुकवर्म, राउंडवर्म, पिनवर्म. Eating of contaminated raw vegetables, fruits and undercooked foods must often lead to infection. जदि आमे कंचा बा खोला हेतिबा जेमति कि अधा कटा हेतिबा पनिपरिबा रहिछि कि फल रहिछि होला आ सेटा जेहेतु कटा हे कि रहि जाइछि सेटा ओपन हे कि रहिछि इट इज इजीली कंटामिनेटेड. तो सेई फ्रूट्स अंडरकुक्ड फूड ହେଲା ଅଧା ଅଧା କୁକ୍ଡ ହେଇଥିବ most often lead to infection. This parasite is cause gut damage leading to diarrhea, bloody stool, abdominal pain, weight loss. ସେଇ जो parasite open माने जोटा कटा ହେଇକି ରखा ହେଇଥିବା फल पनिपरिबा ताकू आमे सेमति करी खाइदबा सेठी parasitic development ହେଇଥାଏ आ सेटा पाटी बाटे हमरो बॉडी को एंटर करे जहा फल रे कोन हुए ना डायरिया हुए ब्लडी स्टूल रे ब्लड आसे एब्डोमिनल पेन एंड वेट लूज मध्य हो जाए और एनीमिक बंदे होती. तो कॉमन पैरासाइटिक इन्फेक्शंस है टिनियासिस बा टेप डिजीज टेप वर्म तो कहती. टिनियासिस टा कौन हुए कॉज बाय बीफ टेप वर्म occurs in area where beef is eaten. जोठी सब गाई मांस बा गोरु मांस खाती बा बीफ ସେଇଠି ସେଇଠି ଯଦି ଓପନଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ ବିଫ୍ ଇଜ୍ ଇଟିନ୍ ତ ସେଇଠି କଟା ହେଉଥିବ ସେଇଠି ତାର ର ଫ୍ଲେସ୍ଟା ଥିବ ସେଇଠି ଆମର ଟିନିଆସିସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଟିନିଆ ସାଗ୍ନେଟା ସେଇ ବିଫ୍ ଟେପ୍ ୱାର୍ମଟା ସେଇଠି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ବା ସେଇଠି ସେମାନେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି. ଟିନିଆ ସୋଲିୟମଟା କେଉଁଠି ହୁଏ एरिया व्वेर पर्क इज कंज्यूम जोठी कि घुसुरी खाती तो तार जो फ्लेश रे सेठी टिनिया सोलियम प्रोडक्शन हुए. एंड इंडिया इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एंडेमिक एरियाज फॉर द इन्फेस्टेशंस. इंडिया रे एक्चुअली बेसी स्प्रेड हुए कारण आमर बीफ बहुत लोग खाती जो आमर पर्क बहुत लोग खाती घुसुरी. इक्विनोकस granulosus is known as dog tapeworm जोठी सब कुकुर खाती dog tapeworm separate subsequently heading hydatid disease. hydatid disease ताकू कहती जो माने यही पैरासाइट्स द्वारा अफेक्टेड होती
Echinococcus granulosus, है ना? The body of tapeworm consists of head, a short neck, and strobila made of the chain of separate segment. Troglodytes. Where and how does it occur? केमिति हुए ना टेनियासिस is cosmopolitan in distribution. ଏଇଟା ସବୁ କୋଉଠି ଟିନିଆସିସଟା ବେଶୀ ହୁଏ ଯୋଉଠି କି ବେଶୀ ଆମର ବିଫ୍ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ପର୍କ ଖାଆନ୍ତି ଡଗ୍ ଖାଆନ୍ତି ଇଟେନ୍ ର ଲାଇଟଲି କୁକ୍ ମାନେ ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଖାଆନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ଭଲରେ କୁକ୍ ନ କରି ଖାଇଲେ ତ ସେଇ ପାରାସାଇଟଟା ଆମ ବଡିରେ ଏଣ୍ଟର ହେଇଯାଏ. Sometimes man may also get infected with the adult worm following ingestion of eggs and contaminated vegetables containing the larval stage of parasite. बेले बेले कौन हुए ना आमे जो एग वो वेजिटेबल तर ता पाखरे टिनियासिस अफेक्टेड जो रहिला मीट्स ता पाखरे हमर वेजिटेबल्स रहिछि धर कि आमे गोट जगह रे स्टोर कर देलु बीफ गोटे फ्रीजर रे आमे बीफ स्टोर कलु ता पाखरे आमे कट्टा हेतिबा फल माने जोटा कि होल फल नथिबो कि पंपकिन बा कखारु काटी के रखि देछु हला टमाटो फाळे रखा हेछि तो द जो हमर पैरासाइट्स का इजीली स्प्रेड टू एंड माने तार नियरर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ता पाखरे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थाए से पैरासाइट ता सेटू को इन्फेक्टेड हे जाए तो जो माने वेजिटेरियन थिबे तर वेजिटेबल्स फ्रूट्स को काटी के रखिथिबे सेठी हला एंड फॉलोइंग इंजेक्शन में एग्स आर मे बी इन्फेक्टेड विथ एडल्ट वर्म तो अंडा रखिथिबे छडे के अंडाटा रखिथिबे हला तो सेठू से इन्फेक्टेड हे तो सेटा आउटे हेल्दी पर्सन जो माने कि पर्क बीफ एडा खाउ नथिबे ता पाखरे एई खाद्य सब कट्टा हे कि थिबो हला ओपन थिबो तो सेठी पैरासाइट इजीली एंटर्ड हे कि तो इट विल बी अफेक्टेड टू द सेई पर्सन को अफेक्ट करिवो. What is the effect of eating contaminated food? Infected tinniasis. Signs symptoms लेखुचे tinniasis रो clinical ill health abdominal discomfort लागिबो भोक कमी जाए anorexia and indigestion हबो. Other associated symptom may be nervousness, lack of sleep and loss of weight. Weight lose मा muscle wasting हे जिवो रात्रे निद हबनी कारण abdominal discomfort लागे बोले रात्रे निद हबनी आउ loss of appetite भोक मरी जिवो पूरा तो Cysticercosis is an important public health problem caused by T. solium. जो माने पर्क खाती तो से मानकर से पैरासाइट हला T. solium, the tinea solium. The condition is caused by ingestion of egg of T. solium is contaminated food or water. तो अंडाटा जदि contaminated हेइथिबो T. solium रु with food or water खाद्य और पानी रु जदि खाद्य माने धर पर्कटा सेठी टी सोलियम रे काटिकी सेई पाखरे रखिचो ता पाखरे गोटे बॉइल्ड एग रखिदेल है सेटा इजिली कंटामिनेटेड हो गला regurgitation of egg from small intestine in the stomach. These egg disintegrate in the stomach and the larvae penetrate the gut wall and may reach any part of the body. तो स्टोमक को गला तापर से सब पार्ट्स को स्प्रेड कला से कहा को ऑर्गन को अफेक्ट करिवो गोटे ब्रेन को करिवो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम गोटे आई को करिवो लंग्स लिवर मसल्स आउ स्किन एति को से करबे इन कोर्स ऑफ टाइम दे कैन कैल्सिफाइड तो से पूरा कैल्सिफाइड हे जिवो ए ऑर्गन को टिनिया सोलियम हैला ए सब करिवो तो आमे रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शंस कोन ना एई थरो से कौन करे द इन्फेक्टेड पर्सन whose feces contain eggs either in the free from or within the proglotids of the parasite is the reservoir for infection. तो मुझे जंती कहली तो से पैरासाइट्स ता जेतबेले ता अंडा देइथिबो किछि mature eggs then invested by the intermediate
host. Pig cow in tissue larva develop is poorly cooked meat and cyst between protein. हाँ से कहूँ कि reservoir infections माने कौन an infected person से जोठी मोशन करिवो बा स्टूल पास करिवो तो ସେଇଠି ଯଦି ତାର ଫିସେସରେ ଏଇ ସବୁ ଟିନିଆ ସୋଲିୟମର ଏଗ୍ସ ଥିବ ତ ସେଇଟା ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଣି ହଉ ବା ଇଏ ହଉ କଣ୍ଟାମିନେସନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦିୟର ପର୍ସନକୁ ଗଲା ତ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ସାଇକେଲ illustrated example matured eggs are released from the free of the worm and pass in the host into the host stool. Eggs are being ingested by the immediately host in which tissue the larva stages develop when a person eat poorly. ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା poorly cooked meat ମାନେ ସେ meatଟା ଭଲରେ cooked ହେଇନଥିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଟିନିଆ ସୋଲିୟମ ଥିବ ମାନେ parasitesଟା ତ under cooked meat ତାପରେ ରହିଲା the cyst became tapeworm in intestine ତ ସେଇ ଯୋଉ ଏଗଟା ଯାଇଥିବ ପେଟ ଭିତରେ ଏଗ ହେଲା ତାପରେ ସେଟା ଓର୍ମରେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ଓର୍ମ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ହିଁ ଓର୍ମ ହବ ହେଲା ଇନକ୍ୟୁବେସନ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ନା ଟିନିଆସିସ୍ ଇଜ ଫ୍ରମ୍ 8 to 14 ୱିକ୍ ଭିତରେ ସେଟା ଏଗରୁ ଟେପ୍ ଓର୍ମ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ in case of then dog D is cattle and this pig whereas sheep and cattle reserve immediate heat ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଯୋଉ ପେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଈ ହଉ ଡଗ୍ ହେଲା ପର୍କ ଯାହା ବି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ ଏଇ ଟିନିଆ ସୋଲିୟମ ହଉ ଆଉ ଟିନିଆ ସାଗ୍ନେଟା ଆଉ ରହିଲା ଏଇସବୁ ଡଗ୍ କାଉ ହେଲା ଏଇସବୁରେ ପିଗ୍ ଏସବୁରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ ଟି ସୋଲିୟମ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପିଗ୍ where sheep and cattle serves are immediate host to E granulosis ତ sheep pig ଏଇସବୁରୁ ଟିନିଆ ସୋଲିୟମଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ ପାରାସାଇଟ୍ ଇ ସାଗ୍ନାଟା ଇନ୍ କ୍ୟାଟେଲ୍ କ୍ୟାଟେଲ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଗାଈ ତ ବିଫ୍ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଆସିଯିବ prevent of teniasis कले केमती prevent करिवे first we have to aware the people or educate the people to prevent soil and water contamination by indiscriminate defecation defecation टा सब बड़े sanitary latrines रे ही हमको करिया को पड़िबो जति open places soil रे defecation करिवे it will easily spread in our community जोटा कोनते endemic and to avoid use of sewage effluent for growing vegetables and fodder ଆଉ ଯଦି ସଏଲରେ କୋଉଠି ବି କଲେ ତ ତାକୁ ଆମେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ବା ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି ହେଲା to cook beef and pork thoroughly before use ତ beef ଆଉ pork ହେଲା pig ଆଉ beef କୁ well cook କରି ଖାଇବା କଥା ନହେଲେ ତା ଦେହରେ eggs of larva ଏସବୁ ରହିଥାଏ then after 6 to 14 days 8 to 14 days ଭିତରେ ହିଁ ସେଟା 8 to 14 weeks ଭିତରେ ସେଟା ଆମର କୁକରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ then ensure inspection of meat in slaughterhouse to avoid sale of infected meat तो जदि फ्रेश ହେଇଥିବ ଭଲ କଥା ଯଦି ସେଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଫ୍ଲେଶ ଯୋଉଟା ରଖିଥାନ୍ତି ତ ସେଟାକୁ ଆଣିବା କଥା ନାହିଁ କାରଣ ସେଇ ସବୁ ଫ୍ଲେଶରେ ଓପନ ଫ୍ଲେଶରେ ହିଁ ଏଇ ସବୁ parasites ଟା ଡେଭଲପ କରେ prevent the pig from entering the latrine and eating the waste matter feces ତ pig ମାନଙ୍କୁ latrine କୁ enter କରିବା କଥା ନାହିଁ and eating the waste matter feces କୁ prevent କରିବା identify and refer person harboring adult parasite of T. solium for treatment of prevent cysticercosis necrosis
सेकेंड पढ़ा हाउ टू कंट्रोल टेनियासिस टेनियासिस को केमती कंट्रोल करवा कंट्रोल ऑफ पेशेंट्स कंट्रोल ऑफ कॉन्टैक्ट्स कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड पेशेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट तो सब प्रकार कंट्रोल करवा टेनियासिस को कंट्रोल ऑफ पेशेंट्स कंट्रोल ऑफ कॉन्टैक्ट छड़ा आ कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एनवायरमेंटल सैनिटेशन को रखिबा ठीक से जो कंट्रोल ऑफ कॉन्टैक्ट्स control of patient. Public health authorities may be informed about the occurrence of infestation. T. solium should be isolated until treated. T. solium infected parasite infection jaha koi to you have to keep them in isolated room. Sanitary disposal of feces, rigid hygienic practices for washing of hands after defecations and before eating should be followed. So before defecations, after touching the food, so after eating food, we should clean our hands with soap solutions. सेटा करिया को पड़िबो आ पर्सन्स अफेक्टेड पर्सन को आइसोलेटेड रूम रे रखिबा को पड़िबो एंड sanitary disposal of feces rigid hygienic sanitary disposal of feces सेटा ओपन प्लेसेस रे न हे sanitary latrines we have to use से ताहले जाय के हमें तो कंट्रोल करिया को पड़िबो कंट्रोल करि परिबो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ टेनियासिस यू शुड नो अबाउट द स्पेसिफिक ड्रग्स ट्रीटमेंट्स अवेलेबल टू टी saginate and T. solium consult the physician of medications in case of cirrhosis and on identification surgical excision must be advised the surgical excision तो सेटा भी एडवाइस हे पारे इन केस ऑफ टी सोलियम बा सिस्टिसर्कोसिस सेकंड वन पैरासाइट हला हाइडाटिडोसिस हाइडाटिडोसिस is a parasitic disease affecting mostly the liver or lungs and is due to dog tapeworm तो एटा हला हमर डॉग रो टेपवर्म माने ता माने ना डॉग अफेक्टेड पैरासाइट any other organ in the body may also get affected it can occur an occupational disease in butchers तो जो माने सब माने हमर मांस काटंदी तो सेही एक्चुअली एटा बेसी देखा जाए the infection usually occurs in childhood may take 5 to 20 years for the cyst to grow and manifest the disease तो 5 ରୁ 20 वर्ष निये से सिस्टा को टू ग्रो एंड मैनिफेस्ट द डिजीज तो सिस्टा ग्रो हवा पे 5 ରୁ 20 वर्ष लागे where does it occur the parasite is common in countries where dogs are used to herd growing animals and intimate contact with humans it occurs in South America Middle Eastern countries Australia and New Zealand but the disease is known to occur in almost every country including India with highest prevalence being in Andhra Pradesh and Tamil Nadu तो बेसी पैरासाइटिक कॉमन इन कंट्रीज कोडा देखौची माने जोठी माने कुकुर मानन को बेसी पेट रे रखंती या तो सेठी बेसी हाइड्रोटिडोसिस से देखा जाए पैरासाइट तो तार कारणटा कोन पजने तार कोन ऑर्गन को ऑर्गेनाइजम हुए ना हाइड्रेटिक डिजीज इज इक्विनोकोकस granulosis it is also known as dog tapeworm माने कुकुर संगे रे बेसी कांटेक्ट रे थांती बा पेट्स मानक रे थांती तो सेट में के एटा हुए हाइड्रेटिक डिजीज symptoms are variable and depend upon the location of the growing cyst cyst may be of size of pinhead growing to the size of the football in the liver and lungs एटा सब साइन सिम्पटम्स देखा जाए लिवर लंग्स को अफेक्ट करे the slow growing cyst may not give rise to any manifestations even throughout the life if the cyst occurs in viral organs they may cause severe symptoms and sometimes even cause death तो ताको जदि अनट्रीटेड रे छाड़ी दिया जाए then it will cause death
तापर आम सेवरल सेरोलॉजिकल टेस्ट बा ब्लड टेस्ट आम करके जापर वेदर द पेशेंट इज affected with this hydatidiosis organism বা parasites. What is the reservoir of infections? केते ये ना reservoir हैला को मानक थ्रू रे एटा हुए reservoir माने कहा द्वारा एटा स्प्रेड हुए तो reservoir हैला से definitive host are the dog, wolf and other canis infected with adult or माने जो माने carnivorous intermediate host are herbivorous like cow, sheep, etc. The lifestyle of echinocys granulosis is illustrated. Dog which is infected by echinococcus granulosis begins with the to pass egg of the parasitic about 7 weeks. 7 week भितर से parasite टा पूरा develop करे egg रू form को हवा पाई. And during this process egg can be lodged in the nail, hands. सेटा individual such hands are not washed before it. तो हाथ and nails ସେଇଠି ସବୁ ସେ parasite develop କରନ୍ତି. When the person is not clean her hand with soap solution after defecation ହେଲା ଲୁଜ ମୋସନ୍ସ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ହାତ ଧୁଅନ୍ତିନି ତ ସେ ନଖ ଆଉ ହାତରେ ଥାଏ ସେ ପାରାସାଇଟିସଟା ନଟ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ନେକେଡ୍ ଆଇଜ୍ ଖାଲି ଆଖିରେ ସେଟା ଦେଖାଯାଏନି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ସେଥିରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଦେନ୍ ସେଇଟା ନଖ ଆଉ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରୁ ଯାଏ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଲଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ନେଲ୍ସ hands etc. for individual. Subsequently, if hands are not washed before eating, the eggs get allowed and enter the human body रे enter करिजिवो. What is the incubation period? केते दिन रे सेटा ग्रोथ हबो egg रू हमर worm को. Incubation period is variable from month to years, which depends upon the number of सेटा जोटा रहिला locations of cyst how rapidly they grow. तो incubation period सला month to year एमती लागे से डिपेंड करे से एक्चुअली केते cyst अछि आ से केते rapidly grow होचन से केते जल्दी जल्दी बढ़ुचती से अनुसार spread रो हमरो येटा भी जाना पड़ी जो incubation period. What is the speed of communicability? Dogs begin to pass eggs in the parasite in about 8 weeks after infection. Adult won't survive for 2 to 3 years. The disease is not directly transmitted from animal to man or animal to animal. Then intermediate to host the another. Man does not have the adult owl. तो से कहूँ कि डॉग जितबले से डॉग रो हमर जोटा अछि stool begin to pass eggs to the person about 8 weeks after infection. Dog को इतले infection होची तो सेतबले से 8 weeks after infection से begin to pass eggs for the parasite in about 7 weeks after infection. Adult worm को कोची survive for 2 to 3 years. The disease is not directly transmitted from 8 to 2 to 3 years. The disease is not directly transmitted from man to man or from immediate host to another. Man does not harbor the adult worm. तो सेटा मैन टू मैन ए सब रे कंटामिनेशन रे आसेनी तो जो माने पेट्स रखि थांती जेमति डॉग्स तो डॉग्स रू से पैरासाइट टेस्ट आसे आउ सेटा इज अबाउट 7 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन सब माने इन्फेक्शन सपर 7 डेज भितरे ए सब येडा देखते adult worm survive से कोन करे 2 ରୁ 3 वर्ष रहिथिबो सेंति पैरासाइट्स जोडा the disease is not directly transmitted from man to man or intermediate host to another. तो जल्दी से हुएनी man does not have the adult who are adult or who are vulnerable to infection को माने सब infection माने सेटा स्प्रेड करिया रे को माने ये करंती ना children are more likely to be infected as they have less natural resistance to infection than माने सब केसेस रे देखिबे children माने बहुत affected थांती due to their poor maintenance বা poor hygienical practices.
ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ କେବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରନ୍ତିନି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ଖାଇବେ, ଯେଉଁ ହାତରେ ଥିଲେ ଖାଇବେ, ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କ୍ଲୋଥେସ୍ ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଲିନ୍ ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ବେଶୀ ସଏଲ୍ସ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଆର୍ ମୋର୍ vulnerable to infections, okay, than adults. How to manage hydrate disease to can manage kariba? We should know that there is no specific treatment except surgical removal of the cyst. ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ହାଇଡ୍ରାଟୋସିସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସିସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯାଏ, ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହୁଏ ନା, ଆମର ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ହୁଏ ଲଙ୍ଗସରେ ହିଁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। तो सही केसेस रे हमें कौन करूँ ना, सर्जरी इज द लास्ट सॉल्यूशन। सेटा लिवर और लंग्स रे स्प्रेड हुए, तो लिवर लंग्स को हमरो जो सिस्टा ग्रोथ हुए, तो हमें तब सर्जरी रे ही रिमूव करि पारू। हाउ टू मैनेज हाइड्रेटिक डिजीज को केमती हमें तब मैनेज करिबा, सर्जिकल रिमूवल तो गोटे सॉल्यूशन। हाउ टू प्रिवेंट और कंट्रोल डिजीज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें तब केमती प्रिवेंट करिबा इन्फेक्शन से, तो सेठी लिखिबा एलिमिनेट ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड रिड्यूसिंग द डॉग पॉपुलेशंस। तो जिते जिते आपण कुकुर पालिबे बा पेट्स डॉग्स पेट्स को रखिबे, तो डॉग्स पॉपुलेशन रो पैरासाइट स्प्रेड हो। मास ट्रीटमेंट ऑफ डॉग्स फॉर इक्विनोकोकस, तो जो माने कुकुर घरे पेट्स एज ए पेट्स, यू हैव टू कीप डॉग एज ए पेट जदि आपण रखुचंती, देन ताकू treatment देबे इक्विनोकोकस। You should remember the specific treatments available to treating the infections in dog. तो जितबले डॉग्स को इन्फेक्शन हेबे, तेबे सेतबले ट्रीटमेंट दिया जिवो इक्विनोकोकस पाएंगे। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाए। प्रिवेंशन क्लासेस ऑफ डॉग्स टू slaughtered animal or dead animals, and parasite enter the body when the dog eats the carcasses of the infected animals. Proper inspections of meat stalls to destructions of hydrate, माने जोटा मीट स्टॉल्स को देखिबा जोथरे इन्फेक्टेड बा जोथरे की तार फ्रेश नथिबो, अफेक्टेड एनिमल मीन्स बाय एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इट सेल्स। तो जदि सेटा बहुत दिन माने सेटा जेंति लॉन्ग टर्म रे से रखिथिबो, तो दि दिन जाक सेठी ये करूथबो कि ता ड्यूरेशन से देखिले कि कारण मीट ये सब जिनस गुड़ा, तो सहीटा पेरिसेबल फूड इजिली डिस्ट्रॉयड when it comes in contact with microorganism। तो जितेबाला उदाड़िया बा वेट फूड मटेरियल्स गुड़ा, तो जितेबाला से इन कंटाक्ट ऑफ आवर माइक्रोऑर्गेनिज्म जोड़ा खोलारे रहिला परे, तो सेटा इजिली माने डिकम्पोज्ड हो जाए है। तो से कि माने मीट स्टॉल मानक जोठी भी आछंदी, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रेट इफेक्ट एनिमल मीट मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इट सेल्फ। तो ताको मेथड्स करिबा केमति कोन ये करिबा, ऑब्जर्विंग स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन, अवॉइडिंग क्लोज कांटेक्ट विथ ड्रग्स, intake of raw vegetables and fruits that might have been contaminated with carnivore species। तो कौन करिबा ना आमे तो कहिबा पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन यू हैव टू मेंटेन है। तो स्लॉटर्स हाउस जोड़ा थाए, तो सेठी कौन करा जाए ना डॉग्स रो कांटेक्ट रे न आसिया पे दबा आउरी भलो। ऑब्जर्विंग स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन आ ए सब जिंस रहिले, then we will control the hydrid parasitic infestations। तपरडला एटा टेप वन गला राउंड वर्म डिजीज एटा कोन टिनियासिस गला। आ गोटे रहिला हाइड्रेटिक डोसिस। आथरो गोटे क्वेश्चंस आसीबो अबाउट पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। आउडला एस्कारियासिस राउंड वर्म डिजीज, इट इज द हेलमिंथिक बा पैरासाइटिक वर्म इन्फेस्टेशन ऑफ द स्मॉल। सेटा हला लंग्स आउ लिवर रो गला। हाइड्रेट
ହାଇଡ୍ରାଟିଡୋସିସଟା ଗଲା ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଲିଭର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ଆଉ ହଁ ଟିନିଆସିସରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆବଡୋମିନାଲ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ, ଆନୋରେକ୍ସିଆ, ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଆସ୍କାରିରିଆସିସ୍ ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମ ଡିଜିଜ୍ରେ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ପାରାସାଇଟିକ୍ ଇନଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମ ଡିଜିଜ୍। तो सेटा इंटेस्टाइन ही राउंड राउंड वर्मटा देखा जाए। वेयर डज इट अकर? इट इज अ कॉस्मोपोलिटन इन अपीयरेंस। इट इज मोस्ट कॉमन helminthic infestations. It is estimated that about 1/4 of the population is infected in ASEAN, Latin America countries, etc. तापर से कहा को children in the preschool and school going childs are more frequently affected than older children and adults. Older children adults ମାନଙ୍କ अपेक्षा children ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ affected କରାଏ round worm disease. What is the congestive organism? सेटा हला Ascarisis lumbricoides. It is very important to know the life cycle of roundworm. They live in the lumen of small intestine where they move about freely. So small intestine data production हुए, तो small intestine freely it will move. Both male and female omens exist. The female worm measures 25 to 30 cm. Females जो worms का length of the male worms are produced every day by each male and excreted the fishes. The eggs became embryonated in the soil and became infective in about 2 to 3 weeks. Now, if these eggs gains entry into the gut, they will hatch in small intestine and grow into larvae. So, it our small intestine to affect करे. So, from the lungs they are puffed up through the trachea and the iron, the liver, and then lungs through the blood, and the trachea gets swallowed. माने सेटा कोन हबो ना हमर इन्फ्लाम हेजियो फ्रॉम द ह्यूमन होस्ट एंड इज द इंटेस्टाइन अगेन। जेतो बले सैलोड फॉर्म रे हमर एई सब खाइबा जोटा कि हमर हेलमेनेटिक पैरासाइट गडा जेतो बले फूड थ्रू रे बा हैंड्स थ्रू रे हमर एंटर करिवो, देन इट विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तापरे ट्रैकिया एंड गेट swallowed by human host and reach the intestine again. The worm is between 6 to 12 months. The life cycle of the Ascaricia is the following. तो ये सब रे हमर कोन हुए ना राउंड वर्म जो इन्फेस्टेशंस ता हमर हुए, तो से एक्स्ट्रा हमर कंटामिनेटेड हे कि हमर इंटेस्टाइन को अफेक्ट कराए। Symptoms kono na mild and vague can be absent. Live worm passed into steam and vomiting, loose motion, fever, and are very common. Heavy loads of parasite may cause disturbances in the digestion, pain in abdomen, vomiting. हैला ए सब जिनस देखा जाए। तो सेटा को हमें केमती रोल ऑफ एनवायरनमेंट कोन रहिबो ना हमें एनवायरनमेंट विल बी क्लीन हैंड, सैनिटरी प्रैक्टिसेस, ये सब जिनस आपण करिया को पड़िबो पैरासाइट रो मुक्ति होबा पई। एनवायरनमेंट क्लीन रखिबे, हाइजीन्स मेंटेन करिवे, आउ तापरे गुड फूड्स प्रैक्टिसेस रखिबे, भल खाद्य बहुत समय जे ओपन बा रॉ फूड सडा कट फूड सडा एकाठी रखिबेनी, सेडा हेले अपन ट्रांसमिशन एडा कमी लिबो। हाउ टू प्रिवेंट कंट्रोल ascariasis, जदि पढ़िला हाउ टू कंट्रोल ascariasis parasite, you have to write primary prevention sella sanitary disposal of human excreta, fecal contaminations of soil, so avoid contact with soil,
that may be contaminated with human fishes. So no, you have to use sanitary latrines and provision of safe drinking water, protected from food from soil and wash or reheat any food that falls on the floor. ଯଦି ସେ ସଏଲ୍ରେ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ର ଏକ୍ସରେଟା ଥିବ ବା ଫିସେସ୍ ଥିବ ତେବେ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମାନେ ସେଇ ସଏଲ୍ରେ ଯଦି କିଛି ମାନେ ସେଇ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହେବ ବା ତଳେ ସଏଲ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାସିଂ it well ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା then we will infected with that parasites। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଏଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲା କିଛି ଫଳ ପନିପରିବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୱାଶ୍ କରିବା, reheat any food that falls into the floor। ଯାହା ବି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ଗରମ ପାଣିରେ ଭଲକରି ଧୋଇଦେବା। improve habits with regards of food hygiene। ତ ଫୁଡ୍ ହାଇଜିନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା, ମାନେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ହେଇନଥିବ, ଅଣ୍ଡର କୁକ୍ ଫୁଡ୍ ହେଇନଥିବ, you have to take wash hand with soap and water before handling food। କିଛି ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ବା ଆଫ୍ଟର ମାନେ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଟିଂ ବା ଆମେ ଖାଇବା ଇଏରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଧୋଇବା। Then health education community in the use of sanitary latrine and improve personal hygiene। So we have to aware the people or give the health educational tips to the community people about to use sanitary latrine and also clean your environment as well as personal hygiene। तो ये सब जिनस आमे कले एड़ा सब हमकु हबनी। आ सेकेंडरी प्रिवेंशन रे हम कोन करबा, सेथरे लिखिला cases in the reservoir and specific treatment available, medical advice to confirmation about the treatment। तो से किछि medications देबे, allowed to drink lots of fluids per day। ascaris रो कोन ट्रीटमेंट, this high infested areas periodic deworming and mass basis in the undertaking of interval of 2 to 3 months। However, mass treatment will be the mass treatment will be going on। तापरे कोन हबो ना how does it occur रे आसीबो, सेटा एक्चुअली इन टेम्परेट क्लाइमेट्स जोठी कि बहुत गरम क्लाइमेट थाए तो सेठी एरा सब ग्रो करंती। एंड हुकवर्म सेटा कोन होला ना ट्रांसमिशन merely reduced to own load efforts in the direction of improvement of sanitation may only will help to eliminate the ascaris। तो ये सब ये रे जहाँ जहाँ कहली स्टेप्स गुड़ा hand hygiene, environmental sanitation है आउ आमर जो सॉइल रे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होची सॉइल्स रे कांटेक्ट रे जदी फ्रूट्स वेजिटेबल्स आछी यू हैव टू थॉरोली वॉश इट देन यूज। आ जो पर्सन्स आउ ताको सेप्टिक लैट्रिन्स यूज करिया को पड़िबो जा फल रे कि कंटामिनेशन चांसेस कम बढ़िबो। तो एटा हला हमर ये आउ किछि मेडिकल एडवाइसेस मध्ये निया जाय। आउडला एनसाइलोटोमाइसिस हुकवर्म इन्फेस्टेशन सेटा राउंड वर्म गला, एटा हुकवर्म आसला, आगटा जायतला टेपवर्म। तो ना सब सुनिथिबे अबाउट द हुकवर्म एंड राउंड वर्म, ये सब जिनस जानिथिबे। तापरे हमें पढ़वा हुकवर्म इन्फेस्टेशंस is one of the most dangerous disease of childhood। छोटो पिलांकर हुकवर्म इन्फेक्शन सही थाए। It is also known as ankylostomiasis। Any child who is anemic, very pale and eats diet that he may have hookworm। जो चाइल्ड माने एनेमिक थांती और पेल थांती इट्स दैट बाय देयर हुकवर्म मे हैव हुकवर्म। माने से माने तळु उठे कि जते मैला हो ये हो जहाँ पाइबे से खाई दियंती तो से माने बेसी हुकवर्म रे अफेक्टेड होते, माने मोस्टली हला इन्फेंट्स ओडा बा चिल्ड्रन माने। हाउ वेयर डज इट ऑकर केतेबेले हुए ना मॉइस्ट क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन रे सेठी बेसी देखा जाए। बिहार ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ये सब ये मानक देखा जाए। व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किए तार कारण हुकवर्म रहला एनकोलोस्टोमास
duodenally and necator, uh, amri and third organism through rare is also identified, ancylostoma and silencium ये सब है ता organism तो तार है से commonly infects cat dogs as well as man तो ये जो hookworm टा खाली human beings को affect करनी it will infect cats dogs as well as man को है ना both infection is acquired only through skin while ankylostoma infestations are acquired by both oral and percutaneous but through the skin routes life cycle of duodenal is it is an interesting to know the life cycle of hookworm. The egg passed in the feces and contain a segmented ovum and deposited under favorable condition and where the egg and hatches after 1 to 2 days can be seen. तो एटा एक्चुअली हमरो ता माने हमरो खाली ह्यूमन बीइंग्स को हुए नि कैट्स हुए डॉग्स हुए मैन्स हुए तो इन्फेक्शन सडा हमरो ओरल एंड प्रीक्यूटानेस रूट्स रे बा स्किन थ्रू रे भी अंदर हुए हला हुकवर्म हुकवर्म को केंते प्रिवेंट करिबा सब सेम sanitary technology or soil pollution must be prevented by sanitary disposal of human feces man you have to use septic latrine chemotherapy is given reservoir control can be achieved by finding treatment of all infected persons in the community है ना तापरे and infection is present first that should be treated treatment of anemia कारण जेतବେଳେ हुकवर्म हुए सेतବେଳେ सी एनीमिक मध्ये हो जाय थाए द कॉम्प्लिकेशन हुकवर्म डिजीज लाइक एनीमिया एंड रिडक्शन इन सेरम प्रोटीन तो प्रोटीन लॉस हुए ता छड़ा से एनीमिक हो जाय थाए रिसीव अटेंशन देयर इज सिवियर एनीमिया हेमोग्लोबिन लेस देन 5 है ग्राम पर डीएल तो ये जब 5 रु तलू हो गला तो सिवियर एनीमिया ता कहते शुड बी ट्रीटेड विथ सप्लीमेंटेशन तो माने हमरो जेमति कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन गोटे रहइबो हला आयरन सप्लीमेंटेशन इंट्रावेनसली हबो आ ओरल सप्लीमेंटेशन हबो आयरन टैबलेट्स अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स इवन विथ पेरिफेरल हेल्थ वर्कर्स तो ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନିମିଆ ଚାଲିବ କେମୋଥେରାପି and sanitary latrine use of health education is most important and we have to educate our community involvement essential control of the disease promotion of use of sanitary latrine use କରିବାକୁ କୁହାଯିବ wearing of protective footwear ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ latrine ଯାଉଛନ୍ତି they will use footwear improvement of economic and social conditions so the persons will improve their economic and social conditions तापर हमें पढ़िबा आउटे पैरासाइट amoebiasis the term amoebiasis means a condition of harboring a protozoal parasite तो एटा हला protozoal parasites disease of cosmopolitan parasite infection with worldwide distribution the public health significance in Asia and Africa in area where there is no proper sanitation in disease will be anywhere from 10 to 50% of the even more. It is estimated nearly 15% of the Indian population is affected with Indian population 15% affected with amoebiasis. ହେଲା पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ହେଲା ई हिस्टो Litica. It is a not a worm, but it is an animal or parasite that dwells in the lumens of the colon. तो colon रे develop करे सेटा है सेटा गोटे one type of parasites and where the favorable conditions of the organism तो सेठी कौन remain in the month in favorable 55 heat above 55 degrees Celsius lack of moisture killed by boiling water हाँ
एमाने जो अमोबाइसिसटा केमती हबो ना पानी रे से माने थांती तो इफ यू बॉईल द वाटर हीट इट फॉर heat above 55 degrees Celsius then amoebasis parasites are dead. Chlorination can destroy the seeds. तो पानी रे क्लोरीन वाटर को देकी तो destroy the cyst of the amoebasis, but the most amount normally used in cities and towns for purification of drinking water is ineffective. ହେଲା ineffective हुए कारण पानी रे क्लोरीन पका हुए पानी रे क्लोरीन आउ बाकी पानी को हीट करा जाए 55 डिग्री सेल्सियस रु एबव को हीट करा जाए कि अमोबाइसिस पैरासाइट्स को नष्ट करा हुए. व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ अमोबाइसिस तो सी भी हमरो अफेक्ट करे तार सिम्पटम्स हला इट विल डिजीज कैन अफेक्ट इंटेस्टाइन प्लस हमर इंटेस्टाइन को अफेक्ट करे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिस्टम such as liver, lungs, brain, spleen, skin सब को करे. Amoebasis liver abscess जोटा अच्छी diarrhea is the most common form of extra intestinal amoebasis. तो ये सब केसेस में we have to liver abscess, diarrhea is the most common external amoebasis and dysentery and आमे ताको कौन करबा ना क्रोनिकली इल पर्सन और सिम्पटोमेटिक सिस्ट पासर्स हैला तो सिम्पटम नॉन सिम्पटम जहाँ सिम्पटम्स थिबो जहाँ नॉन सिम्पटम्स किछि नथिबो इफेक्टिव मटेरियल हैला सिस्ट ऑफ ई हिस्टोलाइटिका जदि से सोर्सेस ऑफ वाटर कंटेन्स इन्फेक्शन द फिशेस कंटेनिंग सिस्ट ऑफ ई हिस्टोलाइटिका रो जदि एक थिबो से जो excreta of the affected persons ro तो एटा जदि कहा contamination से water contamination हो soil contamination आसला then another healthy person will be affected with amoebasis. Amoebasis टा easily spread in a family and also in a community. Endemic हे जाए तो सत्य पाएंगे who get affected so all family members and community peoples are easily affected with amoebasis है. Then what is the period of communicability? One excreta the cyst. This period may last for several years if causes are not identified. यदि treatment न करिवे untreated छाड़ी देबे then it will spread in your home as well as with community. What are the environmental factors including environmental factors low standard of living due to lack of knowledge awareness एडा सब होला factors influencing amoebasis. How does the disease get transmitted? So transmission oral fecal route re habo in case of other organization and jemti vegetables raw eaten khulla kotta and fill irrigated with sewage polluted water conveying infections. से जो excreta of the infected persons रो जदि हमें soil बा प्लांटेशन ऑफ ट्री अंडर रे जदि दबा तेबे भी हमें अफेक्टेड होबार चांस बहुत बढ़ी जाए. अनहाइजीनिकल हैबिट्स प्रैक्टिसेस ये सब जिनस कॉम्प्लिकेशंस अमोबाइसिस हेले तो अल्सरेशन में लीड टू परफोरेशंस विथ इमरजेंसी कंडीशन एंड पैरालाइटिक इल्यूएस गॉट पैरालिसिस देखा जाए व्हिच में फर्स्ट डेथ अमोबाइसिस जदि बहुत अनट्रीटेड छाड़ी देलु तो सेटा बहुत मात्रा स्प्रेड हो गला तो से कम करे सिवियर इन्फेक्शन से ये से हमर जो माउथ थ्रू एनस जाइन जो हमर गॉट अछि तो तार इफेक्टिवनेस ता कम ही जीवो बा तार जो वर्किंग स्टेट्स ता सेटा इनएक्टिव पूरा हे जीवो may be cause death. Depending upon the severity of the infection, the treatment and the conditions of the persons affected, the disease may be become chronic and protracted. These patients will manifest non-specific and varied symptoms. Another condition already indicated in amoeboma, a tumor-like mass which may develop in cecum, a part of the colon.
or in the sigmoid colon. ହେଲା तो से जो ट्यूमर और मास जो डेभलप करिवो कॉलोन रो व सिकम रे आ सिगमोइड कॉलोन रे तो सेटा हमर रिस्क फैक्टर्स प्रिवेंशन से या सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ यूज ऑफ सैनिटरी लैट्रिन ट्रीटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड्स इन आयोडीन सॉल्यूशंस ऑफ वाटर है ना आयोडीन सॉल्यूशंस ऑफ वाटर और acetic acids or vinegar render them free of amoebiasis cysts ଯେତେବେଳେ ର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବା କିଛି ଆମର ଯେମିତି ମାଟି ତଳେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସଏଲରେ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ସଏଲରେ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ସ ହେଉଛି ବା କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବା ବଏଲିଂ ୱାଟରରେ ୱି ସୁଡ୍ ୱାଶ ଇଟ୍ ୱେଲ୍ फूड हैंडलर मस्ट बी पीरियडिक हेल्थ चेकअप करिया कथा फूड हैंडलर सर should be health educated in aspects of personal hygiene we should educate the people about personal hygiene environmental sanitation etc और secondary prevention sala early diagnosis promote prompt and complete treatment from the important aspects in secondary prevention care should be taken in treatment of the patients who are affected with amoebiasis and certain drugs used in the treatment of amoebiasis. तो आम किसी स्पेसिफिक हैंड हाइजीन मेंटेन करवा सैनिटरी क्लीनलीनेस फॉलो करवा है बिफोर टचिंग और ईटिंग द फूड तो वी शुड क्लीन आवर हैंड विथ सोप सॉल्यूशंस और फूड हैंडलर्स माने मेनली दे विल focus on the cleanliness about your cleanliness when food handlers ସେମାନେ cleanliness को बहुत देखिया कथा and protects water supply from fecal contamination by filtration and boiling and you should advise the persons to take boiling or strained water okay giardiasis ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି giardiasis trichuriasis ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ oxyoriasis pinworm ଗୋଟେ ଅଛି worm infestation रू actually parasitic infections रू तो दी तीनटा क्वेश्चंस ऑलरेडी आसीबो न गोटे लॉन्ग आसीबो गोटे शॉर्ट आसीबो यू हैव टू राइट देयर साइन सिम्पटम्स and the reservoirs also the preventional methodology or precautions steps ये सब जिनस लिखा को पड़ेगा anyone with any questions you can ask me about today's topic tomorrow we will study about food intoxications सेटा हमर लास्ट क्लास काली तो जो माने बहीटा को भलरे पढ़ी के आसीबे एनी डाउट्स विल अराइज कारण पूरा नीट एंड क्लीनली आ पूरा एलाबोरेटली आई विल डिस्कस्ड अबाउट वन टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स है सबू जाक एलाबोरेट बहुत सुंदर होउची मु इंग्लिश रे भी कहूची एज वेल एज आई एम एक्सप्लेनिंग इन ओडिया लैंग्वेज आल्सो इंग्लिश ओडिया बोथ रे होउची then first of all you have to read the book thoroughly and you can ask me any doubts because tomorrow is your last class okay thank you